You can consider two of them. Okay, one we consider is for polar molecule students, and the other one we consider students non-polar molecule. See, when I made it very clear for dipoles, I gave you an example of water molecule students. यानी वहां पे उनका center of charges are very well separated. अगर separation distinct है, polar molecules. अगर separation distinct नहीं है, they are one and the same. That is non-polar. So if somebody asks you what are polar molecules, so तुम्हारा answer होना चाहिए polar molecules are the molecules in which the center of positive charge and negative charge, okay, is naturally separated. Center of positive charge and negative charge, student, is naturally separated. This is what we call as a simple polar molecule, students. Whereas यहाँ पे for non-polar molecules, if in case we happen to consider, then in this case the center of positive charge and negative charge is one and the same. So we are center of positive charge and negative charge is same, students. हम जब भी studies के बारे में बात करेंगे students, we certainly go for polar molecules. I give an example. We consider for polar molecules. If I happen to consider, it was water molecule. I give an example. 105 degrees वाला लिया था मैंने. So water molecules is an example. We can consider ammonia is an example. A few examples you should know in that case. Sulfur dioxide, sodium chloride. What are these? These are all polar molecules we consider. यानी यहाँ पे तुम्हारा inherent property क्या है? कि उनका जो center of charge है वो very well distinct है. मैंने water molecule के हिसाब से बताया था students. If in case if you recollect, so if I happen to go for these are two hydrogen separated by one oxygen. It was like this. So this is the center of mass of oxygen. This is center of mass of hydrogen. So यहाँ पे अगर मैं imaginary line draw करूँ, so this we consider is what the electrons takes in. They are having two electrons. They give away the two electrons to oxygen. So the charge over here is plus 2e, and over here the charge is minus 2e. उसको हम कैसे लिखते हैं? Minus q and plus q. So this is what we consider is for water molecule. And they are very well separated. See, there is a separation between them. The separation is 12. These are polar molecules. ये है तुम्हारा non-polar molecules. Non-polar molecules के अंदर अगर तुम example देखोगे तो they are linear. More precisely, they are more of linear molecules we consider. जैसे hydrogen होगा, chlorine molecule अगर तुम लेते हो, okay. If in case if I happen to go for carbon dioxide molecule, you can go for methane. We consider what exactly these are non-polar molecules. So this is what a student should keep in mind. The time when I gave you four polar molecules, I'll just give you the mathematical relation जो आप लोग ने पढ़ा है. First of all, your dipole moment. P stands for electric dipole moment. That's Q into 12 students. ये मैंने दिया था. और उसका unit is coulomb meter in this case. And that's the SI unit, students. Okay. You can consider in coulomb meter. One more student had put forward. At the end, somebody had given the unit of debate. शायद हर्षिता ने ही बोला था. Okay. So, yes, sir. अच्छा, तो ये जो debate था वो actually unit is coulomb meter itself only in that case. That's a SI unit we can consider. इन दोनों के बीच में relation भी है students. One debate अगर तुम देखते हो तो it is how much we consider this. It's 3.33 into 10 raised to minus 30 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. That's the relation between the two. ये ध्यान में रखना students. That's the unit of electric dipole moment we consider. Is this clear? Students, is this much clear? Yes, sir. I told you about when this dipole is placed in an external uniform electric field, what happens? It undergoes motion, यानी उसको एक torque लगेगा. So what exactly the formula for torque we consider is? It's P bar cross E bar we consider. So that is equal to E sine theta.
ये जो थीटा है वो क्या है? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? डिड आई डू एनीथिंग आफ्टर दिस? इसके बाद में मैंने कुछ बोला था स्टूडेंट्स? सर आपने वो फॉर्मूला डिराइव किया है वर्क डन का. ओके, वर्क डन का मतलब यानी वो फॉर इंटीग्रेशन वाला था. हाँ सर. यस. ओके, वर्क डन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. स्टूडेंट्स, यानी अगर ये डाइपोल को सपोज अगर मैं रोटेट करता हूँ, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, थिंक इन दिस मैनर, दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल. सपोज ये देखो, ये सोचो ना, ये ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है. ओके, सपोज अगर मैंने ये डाइपोल को आई हैव टाइड इट विद अ स्ट्रिंग एंड आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इनटू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, let us say this part of the electric field is connected to negative potential and this part of the electric field is connected to positive potential, or I can put in this manner, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, इसको मैं नेगेटिव लेता हूँ, और ये जो है P1 एंड P2 आर टू प्लेट्स जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है और ये नेगेटिव चार्ज. तो मुझे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है? इट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये डाइपोल इस पैटर्न में अलाइन होगा? इट विल ट्राई टू रोटेट. व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द डाइपोल? This is positive charge, this is positive and रोटेट. it will rotate in that case. यानी suppose अगर मैं इसका work done का formula निकालूं स्टूडेंट्स, अगर मैं work done का formula निकालूं, तो what exactly the formula for work done you all have learned it? Work done का formula क्या है? It's PE cos theta 1. यानी what is theta 1 स्टूडेंट्स? ये कौन सा पोजीशन है मुझे बताओ, फाइनल पोजीशन या इनिशियल? सर फाइनल. नहीं, इनिशियल. Who said it initial? हाँ, दीप ने बहुत ध्यान से सुना था. स्टूडेंट, जब इंटीग्रेशन करने के टाइम पे मैंने लिया था ना, तो अगर बाहर नेगेटिव साइन आता है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है. लेकिन अगर तुम नेगेटिव साइन निकाल दे तो फिर ये होगा तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और ये हुआ तुम्हारा फाइनल पोजीशन. अभी सोचो मैं इसका प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करूं तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? तो आई विल कंसीडर द इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. आई विल कंसीडर विल बी व्हाट डायरेक्शन वी कंसीडर. सो व्हाट एग्जैक्टली थीटा 1 वी कंसीडर? With what exactly theta 1 I'll consider will be in this case. So I'll consider the direction of the electric dipole moment is from where to where? It's E we consider. So that is horizontal we consider. Negative, positive, the field is going in the direction. So can I say it's 180? Cos of 180 हो जाएगा. अगर ये डाइपोल पूरा टर्न हो जाता है स्टूडेंट्स, if it turns around, यानी can I say ये तुम्हारा भी होगा. तो मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम होगा कि नहीं होगा ना? हाँ स्टूडेंट्स, it will rotate. Agreed? हाँ सर. ध्यान से देखना, पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल होगा? मुझे बताओ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है? सर स्टेबल. कहाँ से स्टेबल होगा माय डियर? ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो उसको रिपेल करेगा ना. तो क्या होगा? वो फ्लिप होना शुरू करेगा ना, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. जैसे वो रोटेट होगा और फिर वो अपने आप को अगर यहाँ पे ऐसे अलाइन कर देगा तो वो क्या हो गया? अभी देखो, अभी स्टेबल है, अभी रोटेट करेगा नहीं. इनिशियली ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इनिशियली ये तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. सपोज अगर मैंने यहाँ पे प्लस क्यू लिखा है, यहाँ पे माइनस क्यू लिखा है, स्टूडेंट्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? आर दे पैरेलल एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल तो थीटा क्या होगा? 180. 180. जब भी वो पूरा रोटेट हो जाएगा, सपोज अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन लेता हूँ और वो अनस्टेबल है, क्या है? अनस्टेबल. जब भी वो पूरा रोटेट हो जाएगा तो अभी देखो, अभी उसका पोजीशन कैसा होगा? So can I say now this becomes my direction of electric dipole moment? Now is it parallel or anti-parallel? सर पैरेलल. पैरेलल. Parallel हो गया. यानी यहाँ पे तुम्हारा थीटा पाई रेडियंस हुआ, यहाँ पे थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हुआ, तो ये क्या हुआ? ये फाइनल पोजीशन. ये क्या हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या ये रोटेट करेगा डाइपोल अभी?
और स्टूडेंट्स क्या ये रोटेट कर रहा है पोल? नहीं, यानी फ्रॉम अनस्टेबल से स्टेबल हो गया। तो अगर सपोज मैं इनिशियल में 180 लेता हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये cos थीटा 1 है माइनस cos थीटा 2, फाइनल पोजीशन कितना है? तो व्हाट इज माय आंसर? व्हाट इज माय आंसर? वर्क is equal to what? Cos of 180 is minus 1. This is also minus 1, so what's my answer? Minus 2PE. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस तब ये ध्यान देना है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट वी कंसीडर इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Yani when you understand about dipole students, first of all you should know what are polar molecules, what are non-polar molecules. Polar molecules के अंदर तुम्हारे negative positive are aligned in one direction, ये randomly aligned है। I getting it? ये dielectric form करता है, जैसे तुमने dielectric अंदर डाल दिया between two parallel plates, so what exactly we consider? There is an electric field inside, resultant electric field intensity कम हो जाती है। मैंने बताया था E outside E inside होता है, resultant will be E0 minus E है। वही अगर मैंने कंडक्टर ले लिया तो the resultant electric field intensity will be inside will be 0. So all the things are students to keep in mind. Polar molecules का मतलब क्या, non polar molecules का मतलब क्या, examples क्या है, separation क्या finite है, yes. Then what is the formula for dipole moment? Electric dipole moment unit is coulomb meter or debye. We consider that's a conversion. We consider formula for torque acting on electric dipole. Work done. This work done, students. This work done gets stored in the charge in the form of what? Electrostatic potential energy, which is in Joule. Is this clear, students? Can I erase this, students? No, sir. Sir, done. Done. Okay, students.
Now, after going through the concept of your electric dipole moment, work done, torque in this case, now we go for electric field intensity along the axis and along the equator. Students, how exactly your chapter moves ahead? The answer is how to remember. ये बहुत बड़ा chapter है. Chapter को remember कैसे करते हैं? तो तुम्हें पहला जो concept था, charge था, static था, फिर ways in which charge can be distributed, distribution of charges के बारे में था, quantization था, law of conservation of electric charge, फिर electric field lines के बारे में था, characteristics of electric field lines के बारे में था, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है, कॉलम्स फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, फिर उनका जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया, ये पूरा पार्ट जब एक कंप्लीट हुआ उसके बाद में वी वेंट फॉर, आफ्टर दैट वी वेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, dielectric for vacuum, dielectric for any other medium में होगा तो कैसा होगा, how does electric field lines considered in a dielectric medium or in an conducting material, we learned about that part of it. जैसे वो complete हुआ, then we went for concept of electric dipole. Now हम electric dipole पकड़ के we'll go for electric field intensity along the axis and equator. ये derivation करने के बाद में सीधा हम जाएंगे potential at a point. Potential at a point due to a charge, single charge. Potential difference, potential energy, ये तीन चीज एक साथ में होगी स्टूडेंट्स. जैसे ये खत्म होगा उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, और फिर वापस डाइपोल का पोटेंशियल के साथ में. प्लीज हाउ टू I'll make you understand what exactly I'm doing. This is how the flow should be. यानी तुम्हें याद होगा कि कैसे कनेक्टेड करते हैं. So now when you look into it, students, the next part when you consider students, the next part we consider is your concept related to your electric field intensity, students, along the axis and along the equator of an electric dipole. Now to understand this, वापस मैं dipole draw करता हूँ. ये तुम्हारा negative charge है, ये तुम्हारा positive charge है. A line joining the center of the two charges is called as the axis of the dipole, students. Agreed? A perpendicular bisector drawn is called as the equator of the dipole. The distance between the two charges I consider will be 2L. So this much is L, this much is L. I'll consider. Now students, let us find out. हम सबसे पहले कौन सा find out कर रहे हैं? First equation is, ध्यान से सुनना, electric field intensity. और मैं ये equation तुम्हें derive करके दे रहा हूँ students. दूसरा वाला equation try to get it by yourself. बहुत easy है, ध्यान से सुनना. अगर तुम वेक्टर्स में स्ट्रांग हो और थोड़ा सा फॉर्मूला सही आता होगा तो तुम अपने आप कनेक्ट कर सकोगे, और इसके रिलेटेड तुम्हारे प्रॉब्लम्स होते हैं. अभी सपोज मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P along the axis of an electric dipole. I want to find out electric field intensity at a point P. Let us say the point P is over here. ये point P कहाँ पे है? On the axis of an electric dipole. अभी अगर मैं पूछूं कि ये point P का distance क्या है, तो तुम क्या करो? Center से you try to consider this distance to be as R. Agreed? ना अगर सेंटर से डिस्टेंस r है तो मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर इट्स r R minus R l. minus L. और यही पॉइंट नेगेटिव चार्ज से क्या दूरी पे होगा? R r. plus L. R plus L. एग्रीड. अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला तो सबको फॉर्मूला आना चाहिए. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? व्हाट्स द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? तुम बोलोगे सर 1/4 pi 4 pi epsilon 0 K. K for a medium. Is that Q clear? upon R. सोर्स अपॉन r स्क्वायर. यानी ये ध्यान रखना, ये सोर्स होगा, इफेक्ट वाला नहीं आता है. फोर्स में सोर्स और इफेक्ट दोनों आते हैं, वो ध्यान में रखना. तो Q अपन R स्क्वायर हुआ. अभी यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि K इज इक्वल टू 1. ये अज्यूम करते हैं कि K की वैल्यू क्या है? 1. यानी व्हेन यू रेफर टू सर्टेन बुक्स और वो K लेते ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी K ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. नाउ
The question is to find out electric field intensity at a point P along the axis of an electric dipole. Students, उसका मतलब क्या है कि suppose अगर if I take a point P along the axis, तो what is the resultant electric field intensity? मुझे resultant चाहिए. Electric field intensity किसकी वजह से होगा सर? Due to dipole है. पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड अंदर की तरफ आ रही है. तो कहना से ये दोनों वेक्टर्स हुए. तो इसकी वजह से, ये दोनों फील्ड की वजह से, एक बाहर जा रही है एक अंदर जा रही है, उसकी वजह से देयर विल बी सम इफेक्ट एट पॉइंट पी. हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अज्यूम जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम भी अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट अगर पूछा है, तो स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे ट्राई टू अज्यूम, उस पॉइंट पे ट्राई टू अज्यूम दैट यू हैव टेकन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. लेट अस अज्यूम दैट वी हैव कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी. स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, assumption ये है that consider that at point P I have taken a unit positive charge. भले वो नहीं दिया लेकिन हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है. अगर सपोज मुझे पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पॉइंट, हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू अ गिवन चार्ज, ड्यू टू अ गिवन चार्ज, तो वो पॉइंट के ऊपर मुझे चार्ज तो दिया नहीं है, तो हमें अज्यूम करना है अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इज सिंपली 1. ये ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन नेचर पॉजिटिव होना जरूरी है. अभी देखो जैसे इसका मैंने नीचे पॉजिटिव किया, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. सर आपने बोला एट अ पॉइंट पे आपने अज्यूम किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो सर ये बन जाएगा मेरा इफेक्ट और ये बन जाएगा मेरे दोनों सोर्स. एक होगा सोर्स 1 और एक होगा सोर्स 2. ये जो 1 है वो इस चार्ज को रिपेल कराएगा, तो एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा. एग्रीड? हाँ स्टूडेंट्स, देखो ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. क्या ये क्लियर हुआ? वेक्टर हाँ सर. विद Yes. रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा? Attract. एट्रैक्ट होगा सर. एंड डायरेक्शन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स Left नेगेटिव. side. एग्रीड? अब मुझे बताओ दोनों वेक्टर्स में से किसका वेक्टर का लेंथ ज्यादा ग्रेटर होगा, E1 या E2? E2. E2 कहां से ग्रेटर होगा? वो तो डिस्टेंस लंबा है. जितना डिस्टेंस हाँ sir. लंबा उतना Oh. इफेक्ट कम, जितना डिस्टेंस लंबा इतना. यानी अगर तुम वेक्टर नोटेशन के हिसाब से देखते हो तो स्टूडेंट्स ये होगा तुम्हारा लार्जर इन मैग्नीट्यूड, ये होगा स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड. अभी देखो तुम्हें रिजल्टेंट पता चल जाएगा. अरे हाँ सर ये तो दो वेक्टर्स हो गए, टू वेक्टर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सर, इन दोनों के बीच में थीटा तो पाई रेडियंस आ जाएगा, है ना, cos ऑफ 180 आ जाएगा. अगर मैंने cos ऑफ 180 बोल दिया, cos ऑफ 180 बोल दिया, that is -1. What is the resultant field electric intensity I'll consider will be in terms of vector form will be E1 plus E2 we consider. In terms of magnitude अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड के हिसाब से लूंगा तो क्या होगा सर? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ 180. यानी फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा? E1 माइनस E2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या ये क्लियर हुआ? Yes. ये वेक्टर फॉर्म में लेगा स्टूडेंट्स. Are you getting it? Resultant in terms of vector. Are you getting it? Yes. Resultant electric field intensity is the summation, फिर इसका मैं डायरेक्शन, ये तुम्हारा मैग्नेट फॉर्म में हुआ. तो now if in case if I happen to go for what is the resultant electric field intensity, so let us go for that. So now students, your resultant electric field intensity is E1 minus E2. Agreed? Now if I happen to go for E1, E1 का फॉर्मूला क्या होगा सर? ये तो है कांस्टेंट 1/4 pi epsilon naught k is 1 आपने बोला था सर. चार्ज अगर आप लोगे तो कैन आई टेक दिस एज q? Yes. You getting it? Q we consider in this case electric field intensity upon R we consider what is the distance I'll consider? Distance of this we consider electric field intensity is greater than what exactly this will be? So this is R minus L the whole square minus 1/4 pi epsilon naught Q upon R plus L the whole square.
क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. नाउ Yes. विल आई यूज साइन? स्टूडेंट्स विल आई यूज साइन? क्या मैं यहाँ पे चलो ये तुम्हारा कैपिटल क्यू नहीं लिखता स्टूडेंट्स, बस तुम मैंने प्लस क्यू ये लिखा है ना, मैं क्यू लिखता हूँ, बस क्यू लिखता हूँ, ये चार्ज है। स्टूडेंट्स मैंने नेचर क्यों नहीं लिखा? नेचर लिखने की जरूरत है यहाँ पे? No. नो, वी आर गोइंग फॉर वेक्टर्स, वी आर नॉट गोइंग फॉर स्केलर्स। स्टूडेंट्स वेक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, फोर्स होगा, तो नेवर टू राइट डाउन द नेचर पार्ट ऑफ इट, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। तो ये तुम्हारा डिफरेंस हुआ। अभी यहाँ पे तुम्हारा कॉमन क्या आएगा सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, क्यू को भी मैं बाहर निकाल दूंगा, ब्रैकेट में क्या होगा सर? 1/r माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल द होल स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो सर दिस बिकम्स एल माइनस आर द होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल द होल स्क्वायर। ये ऊपर आएगा, सो दिस विल बी आर प्लस एल द होल स्क्वायर minus r minus l the whole square. Is this clear, students? Is Yes. this clear, students? Now, if I happen to go for the resultant field electric intensity, so can I say q upon 4 pi epsilon 0? Now, if I happen to solve this, this is a minus b, students. This is a minus b. This is a plus b. What's the answer of a minus b and a plus b, students? A square, A square minus B square. b square, bar square आ जाएगा। ये क्या है? a square minus b square का फॉर्मूला क्या होगा? a plus b, a minus b। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो 4 RL आ जाएगा। Yes. Agreed. So now if I solve it, E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0. यहाँ पे देखो, अभी तुम्हारा अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा ये प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, ये 2r और ये 2l तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल इंटू 2 इंटू r 4rl होगा। Agreed. हाँ सर। Divided by what? It'll be r square minus l square is the power of 2. Agreed. Now, when you carefully look into it, students, now when you carefully look into it, what exactly Q into 2L? Sir, dipole moment. Dipole. Electric dipole moment, ये क्या है तुम्हारा? Electric dipole moment. Students, what exactly electric dipole moment we consider? Electric dipole moment is Q into 2L. Q into 2L we consider. So can I substitute Q into 2L as what? P, so what's my formula for E is equal to 2 P small r upon 4 pi epsilon naught r square minus L square raised to the power of 2. And that's your electric field intensity, students. And this formula will be in terms of what? Newton Coulomb inverse. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। यही चीज अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? यही चीज मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा बताओ? ये फाइनल डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके डायरेक्शन में जा रहा है? इज इट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? यस। ये देखो ना, ये मैंने क्या बोला, ये लंबा एरो है, ये छोटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? स्टूडेंट्स तुम्हारा E1 माइनस E2 रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, तुम्हारा E1 माइनस E2 रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। So students, my direction of resultant is what? Is in the direction of electric dipole moment. यानी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो E is equal to twice P with an arrowhead small r upon 4 pi epsilon naught r square minus L square raised to the power of 2. क्या ये क्लियर हुआ? This shows that E and P are in same direction. Is this clear, students? यस सर। अभी लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। सपोज अगर यही पॉइंट P, ये पॉइंट P मैंने बहुत ही दूर लिया होता, suppose if point P is very far away, point P is very far away from a given dipole, then for an observer at point P, will the dipole would have been very long, would have been a short dipole? सर शॉर्ट।
शॉर्ट डाइपोल। अगर कोई बंदा दूर खड़ा होकर डाइपोल को देखा तो उसको शॉर्ट डाइपोल, यानी if r is greater than L, okay, r square will be much more greater than L square. So can I say your L square is very small? Students, L square is very small. अगर मुझे expression चाहिए for short dipole, for, तो मैं क्या करूंगा, मैं L square को neglect करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर मैं L square को neglect करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, ये बताओ। Can you tell me the answer for short dipole? तो देखो ये neglect हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये L square neglect हो जाएगा। बच्चे डिनोमिनेटर में क्या होगा, r square is to 2 क्या हो जाएगा, r is to 4 होगा। हाँ स्टूडेंट्स, ऊपर r रहेगा तो कहने से what's my answer for E for a short dipole? What's my formula? 2p upon 4 pi epsilon naught। सर ये तो शॉर्ट है, L square क्यों मैं निगलेक्ट कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर r is to 4 होगा और ऊपर r कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब। Is this clear students? Electric field intensity at a point P for a short dipole is given by the formula 2p upon 4 pi epsilon naught r cube. What is r? We consider distance of point P from the center of the dipole. यह center of the, क्या ये clear हुआ students? मतलब शॉर्ट डाइपोल मतलब बहुत दूर रखा है। हाँ, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या, मैंने पॉइंट P को बहुत दूर लगा, तो फॉर अ पर्सन हु इज लुकिंग एट द डाइपोल, द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, द टू पोल्स आर वेरी, ऑफ कोर्स ये डाइपोल क्या है, छोटा ही है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स। यानी जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये भी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, 10 प्रॉब्लम या 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, 10 में से तुम्हें 7 क्वेश्चंस डाइपोल के लिए होते हैं। फाइनाइट डिस्टेंस का होगा ना, वो हार्डली 2-3 है, और ये फॉर्मूला फिर स्टूडेंट्स आफ्टर 15 दिन के बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसके प्रॉब्लम्स कम पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, और मेंस के अंदर इसके भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये भूल जाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस इसी की होती है, हमेशा शॉर्ट डाइपोल, हमेशा शॉर्ट डाइपोल, हमेशा शॉर्ट डाइपोल। तो ऑफ कोर्स अगर इसी के पहले मैंने डाइपोल बोला था, लुक एट द वाटर मॉलिक्यूल, look at the water molecule, the distance between the hydrogen and oxygen we consider is very small, centers का है finite distance, लेकिन of what, 1 angstrom, it can be very small in that case, 10⁻10, 10⁻9, 10⁻11। तो comparatively अगर मैं कोई point P लेता हूँ along the axis a few centimeter away, that is too far in comparison to that angstrom, तो मैंने क्या किया, मैंने neglect कर दिया, ये इतना छोटा है तो ये स्क्वायर उसका और छोटा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, अगर ये L छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो गया, तो नेग्लेक्ट कर दिया, लेने की जरूरत नहीं है। Is this clear students? Yes sir. So when questions are given to you or problems are given to you, read it very carefully. Are they asking you electric field intensity on the axis for a short dipole? अगर word short dipole हुआ तो ये formula use करना, अगर कहाँ पे भी word short dipole नहीं use किया है, then your formula is 2p r upon 4 pi epsilon 0 r square minus L square is a power of 2. Is this clear? Yes. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, अगर किसी ने पूछा डायरेक्शन तो तुम्हारा आंसर होगा शुड बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऑलवेज इन द Electric डायरेक्शन dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर E along the axis. Can I erase this students? Sir wait. Sir, can you once repeat the direction? क्या बोल रहे हो, Sir, can you once repeat the direction? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along the axis is always in the direction of electric dipole moment. Okay, Harshita? Okay, sir.
Can I erase now, students? Yes. Okay. Okay, students. Now I want to get electric field intensity at a point. Okay, I want resultant electric field intensity at a point P along the equator for a given electric dipole. Can you get the answer for this, students? देखो ये दोनों फॉर्मुलास मैंने लिख दिए. E along the axis लिखा है, R का माइनस L स्क्वायर इस पावर ऑफ 2 ऊपर आ जाएगा. E for short dipole मैंने लिखा है E and P are in same direction for axis. अभी हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए? At a point P along the equator for a given electric dipole. Equator का मतलब perpendicular bisector for an axis is called an equator. मुझे electric field intensity at a point P चाहिए, students. Can anybody tell me how to go about this? बता सकता है कैसे करोगे इसको? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. क्या क्या बोल रहे हो हर्ष? सर पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पॉइंट पी और पॉइंट क्यू तक. पॉइंट पी की क्या क्या निकालना बोल रहा है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा. सर नहीं, मैं बोल रहा था पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पॉइंट पी और क्यू तक. ओके ओके ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. पॉइंट पी और क्यू का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो कहना है पॉइंट पी इक्विडिस्टेंस पे होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है ना? यस सर. क्योंकि point P lies on the perpendicular bisector, so all the points along the perpendicular bisector are equidistant from the given 2 points. तो तुम्हें एक आइसोसेलेस मिला. यानी जो तुम बोल रहे हो, अगर सपोज मैं यहाँ से अगर एक लाइन ज्वाइन कर दूं और ये लाइन ज्वाइन कर दूं, ये मेरा L है, ये मेरा L है, ये टोटल मेरा 2L है. एग्रीड? तो ये तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हो जाएगा. ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा. तो ये मेरा साइड क्या हो जाएगा?
चेन ऑफ पार्टिकल से क्या हो जाएगा, ये होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, है ना, दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैंने क्या बोला था, अज्यूम क्या करना है एट पॉइंट पी, तो अज्यूम ये, Point positive charge. हाँ यानी यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज अज्यूम करो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हारा क्या है, सोर्स, ये क्या है तुम्हारा सोर्स, ये क्या है जिस पे इफेक्ट हो रहा है ना। मुझे पता है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव की वजह से इसको क्या मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा। हाँ स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, will this unit positive charge will go under a force of attraction or force of repulsion? The repulsion. ऑफ कोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में फील्ड भी होगी। यानी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज इसको मैं 1 लेता हूँ, इसको मैं 2 लेता हूँ, तो कहना से ये होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू 1, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा। ये देखो, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया, इसी डायरेक्शन में चला गया। 2 के हिसाब से क्या होगा, Sir, attraction होगा. अट्रैक्शन होगा। मुझे बताओ ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है या सेम होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 1 Sir, अपॉन, same होगा क्योंकि वो same है. वेरी गुड, 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, h क्यूब बाय r स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। हर्षिता समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी ने पूछा E1, क्या E1 इक्वल टू E2 होगा, तो होगा ना, क्यों नहीं होगा। अगर किसी ने पूछा भाई सर आप कैसे बोल सकते हो, तो ध्यान से देखो ना, ये दोनों में सेम आएगा, दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, अरे सर आपने दोनों का डिस्टेंस सेम बता दिया है, देखो ना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है। अरे हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो गई। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 at point P and the magnitude of electric field intensity due to 2 at point P will be equal in magnitude. So what exactly my answer will be? So this will be 1 upon 4 pi epsilon naught. अभी मैं Q को 1 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q upon क्या हो जाएगा? What is R square? What is R square? यानी कहने से this R square is actually I can consider as R dash. Suppose अगर मैं इसको R dash ले लेता हूँ, है ना, तो कहने से इट्स R dash square, तो इसको स्क्वायर कर दूंगा तो कहने से बिकम्स R square plus L square। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? रूट चला जाएगा, है ना, डिस्टेंस को मैंने R dash ले लिया, तो फॉर्मूला में R dash पर आएगा, स्क्वायर कर दूंगा तो रूट चला जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. नाउ कैन यू गेट एन आंसर? नाउ कैन यू गेट एन आंसर फॉर रिजल्टेंट? दोनों का लेंथ सेम होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाउ डू यू फाइंड द रिजल्टेंट? क्या करोगे? The triangle लो. वेरी गुड, ट्रायंगल लॉ। यानी तुम क्या करोगे, वेक्टर्स, वापस वेक्टर्स आया, शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। स्टूडेंट्स ये वेक्टर को यहाँ पे पैरेलल कर शिफ्ट कर दो, तो अगर इसी वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं पैरेलल, तो ये मेरा E1 आया, ये मेरा E2 आया, टेल है, टेल है। मेरा रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, मेरा रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। आगे तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया, ई रिजल्टेंट। तो कैन आई से my E resultant is nothing but vector sum E1 plus E2. Students, what is the direction of resultant? देखो भैया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स? ये पॉइंट P है, एवरीबॉडी केयरफुली लुक इनटू इट। ये तुम्हारा माइनस चार्ज है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो तुम्हारा रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट इस तरफ गया, है ना, देखो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस तरफ है। स्टूडेंट्स डाइपोल का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है? यानी तुम्हारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
at equator, is it parallel to the dipole moment या anti parallel? Anti-parallel. यानी यहाँ पे तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हें पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? Negative. ये ध्यान में रखने की जरूरत। तुम्हारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है। चलो अभी तुम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। कैन यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड? अभी मैं तुम्हारे पे छोड़ता हूँ। लेट्स सी हु कैन गेट द आंसर फॉर दिस। आई एम गिविंग यू ऑल just 3 minutes for this. Anybody can give me the answer? Come on, Harsh. Bhargav, Deep, Harshita, Norman, Jay, Nidhi, Rishabh, Shreya, Siddharth, Sid, Tariq. All of you are good one. Answer करो अभी. ये टाइम कट आउट कम कर दिया स्टूडेंट्स फॉर जेईई एडवांस। शायद 87 पॉइंट समथिंग, 87 या 88 पॉइंट। Total students attempted for 2021 was 9.5 lakhs. 41 students got 100%. 8 of them share same rank, same rank. IITian hub का one student have got 173 or 179 as a. सर रिजल्ट कभी लगा? आ गया आज सुबह 2 बजे रैंकर्स लोगों का आया, पहले 40 रैंकर्स का, फिर शायद कुछ 12:30-1 बजे आया, नहीं दोपहर के टाइम पे आया इनका, दूसरे लोगों का सबका डिक्लेयर हो गया। एडवांस का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। वेबसाइट अभी तक खुला नहीं है, लेकिन 2.5 लाख स्टूडेंट्स को एंटर किया है फॉर एडवांस। 2.5 लाख। जनरली मेंस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं 11 लाख 12 लाख होते हैं, 11 lakhs 12 lakhs। दिस टाइम इट वाज जस्ट 9.5 लाख। अभी बहुत सारे ने ड्रॉप किया होगा, वो सारे अभी तुम्हारे टाइम पे ऐड होंगे, 22 के लिए ऐड हो जाएंगे जिसने ड्रॉप लिया है। Those students who are going for advanced students, you have to be very clear. किसी भी हाल में students
तुम्हें 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना है, और दूसरी बात हो सके उतना ज्यादा 99.4 99.5 परसेंटाइल से ऊपर लाना है, तो तुम एक डिजायर्ड रैंक लेके आ सकते हो 5000 के अंदर, विद इन 5000 रैंक के अंदर मिल सकती है। Anybody getting less than 5000 can get into CS, into some reputed institute, ना कि त्रिची में जनरल कैटेगरी के लिए it's below 700। बहुत टफ फाइट है स्टूडेंट्स, बहुत टफ। तो उसमें से आगे EWS वाले आ गए, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन आ गए, OBC आ गया, शेड्यूल्ड कास्ट आ गए, जनरल कैटेगरी वालों की हालत खराब है। And the NEET paper, which was on Sunday also, students were finding out the NEET paper to be tough. Few of them found out physics tough, few of them found out chemistry tough, few of them found out both tough. कोई कोई तो इतना भी रिव्यू आया है कि ये फर्स्ट पेपर होगा नीट का जो इतना टफ निकाला है इतने सालों में। स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिंसियर रहो और अपने टाइम पे पढ़ाई कंप्लीट करते रहो। हर्षिता, हाँ हर्षिता, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. टाइम पे पढ़ाई कंप्लीट करते रहो, जितना आता है उसको अच्छी तरह से करते रहो। Yes, anybody students getting the answer for this? किसी को मिला आंसर? I know I was speaking to you all. Deep, can you answer? Deep, are you there? Yes, anybody who can answer? Shall I solve students for y'all? Solve करो? हाँ students? Yes, sir. So, ये आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये सिंपल वेक्टर्स है, क्यों नहीं समझ में आ रहा मुझे पता। मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी चाहिए, डायग्राम मैंने सामने बना दिया था स्टूडेंट्स। तो देखो ये थीटा है तो कहने से दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो कैन आई ट्राई टू रिजॉल्व दिस E इनटू टू कंपोनेंट्स, है ना स्टूडेंट्स? कैन आई रिजॉल्व दिस E इनटू टू कंपोनेंट्स? तो अगर मैं E को रिजॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, तो एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, है ना? इसको मैं रिजॉल्व करो E1 को, तो यहाँ पे क्या होगा, E1 cos थीटा, और ये होगा E1 sin थीटा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. वैसे तुम E2 को रिजॉल्व करो ना, ये तुम्हारा एक होगा और ये तुम्हारा दूसरा होगा। क्या होगा ये होगा E2 sin थीटा और ये होगा E2 cos थीटा। मुझे बताओ क्या E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर सेम है। क्या थीटा सेम है? हाँ सर सेम है। तो कहना से ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है ना स्टूडेंट्स? थोड़ा सा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्या इन दोनों का समेशन हो जाएगा, खत्म हो गया।
So what is my resultant for electrical intensity? Students, I can write on E1 cos theta can be written in terms of E2 cos theta. दोनों equal है, तो can I say write on 2 E1 cos theta और 2 E2 cos theta? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes. अभी क्या है? अभी तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ स्टूडेंट्स, अभी इसको सॉल्व करो, चलो अभी इसको सॉल्व करो, गिव द फाइनल आंसर. दीप, आर यू देयर? दीप, दीप अनम्यूट क्यों नहीं कर रहा है? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट क्या होगा? ध्यान से देखो अभी. Resultant, key resultant will be equal to I. Students, what is E1? Deep says there is a lot of background disturbance. Naughty boy. Naughty boy. लेकिन दीप तेरे को ये आया था कि नहीं आया? डेरिवेशन किया था, कंप्लीट कि नहीं किया? तो फिर बोलना चाहिए ना दीप के डेरिवेशन हो गया है. उतना तो तू टाइप कर सकता है ना? ओके. ट्वाइस E1 cos theta. Students, what is E? E1 E2 सेम है, तो कहना से ये होगा 1/4 pi epsilon naught. Students, ये होगा क्यूब. एग्रीड. और यहाँ पे क्या होगा? इंटू 1 क्या होगा? ये होगा r square plus l square students into cos theta. Students, what is cos theta in this right angle triangle? Cos theta in this right angle will be what? Adjacent upon hypotenuse. Can I say this will be under root r square plus l square? Agreed students. So can I run into l upon what exactly? Denominator में क्या लिखूंगा? r square plus l square raised to the power of half. So what is E resultant students? Students, what is q into 2l? q into 2l. q into 2l. तो क्या हो जाएगा? वो p हो जाएगा. Okay, since p is equal to what? q into 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से मैंने ले लिया. मैंने डिनोमिनेटर पे क्या आ रहा है देखो? 4 pi epsilon naught e raised to m into a raised to n, a raised to m plus n. तो डिनोमिनेटर पे क्या आया? r square plus l square raised to the power of 3/2, and that becomes the formula for E resultant where? Along the equator. This answer will be Newton Coulomb inverse. Is this clear students? Yes. स्टूडेंट्स, अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला होगा E रिजल्टेंट द इक्वेटर इज P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज द पावर ऑफ 3/2. अगर यही चीज मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसा आएगा? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा सर? ये एरो आएगा. ध्यान से सुन, ये एरो आएगा, लेकिन साइन क्या होगा? नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज़ So dipole is from minus q to plus q. And हाँ, electric क्या बोल field रहे is हो? in the opposite direction. क्या बोल रहे हो? Sir, both are in the opposite direction. Resultant electric field and dipole. Very good, very good. Electric field intensity and P are both are in the opposite direction. Absolutely correct. देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, नेगेटिव साइन आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया. अगर यही चीज मैंने स्टूडेंट्स शॉर्ट डाइपोल के लिए पूछा होगा तो क्या होगा? तो तुम किसको निगलेक्ट करोगे? मुझे सर एल स्क्वायर इज Sir, वेरी L स्मॉल. square को neglect. यस, एल स्क्वायर को निगलेक्ट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? आर स्क्वायर इज पावर ऑफ 3/2. 2 विल गेट कैंसिल, तो व्हाट्स R आंसर? cube will be. वेरी गुड. सो ई रिजल्टेंट फॉर इक्वेटर, ओके, फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या फॉर्मूला आया? इट्स पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये होगा आर क्यूब. न्यूटन कूलम्ब इनवर्स. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? शॉर्ट Yes. डाइपोल के Yes. लिए मैंने एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, तो ये आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2 आया. 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे आर क्यूब. So now when you see over here students, if I write in vector form, it's in the direction opposite. If I write in short dipole, this is the answer. Students, now can you compare this? Students, now can you compare this with respect to E for a short along the axis? Students, ये क्या है? यहाँ पे भी आर क्यूब है, देखो ना.
दोनों फॉर्मूला सेम आ रहा है। हाँ अगर सपोज मैंने डिस्टेंस सेम रखा तो ही, स्टूडेंट्स अगर ये डिस्टेंस सेम रखा, सपोज अगर मैं पॉइंट पी का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे आर लेता हूँ और वही डिस्टेंस पे रखो तो ही ये कंडीशन अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। यानी अगर मैं प्रॉब्लम देता हूँ स्टूडेंट्स और मैं बोलूँ कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तुम ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, दोनों फॉर्मूला सेम है, तो उसका मतलब क्या होगा, ई एक्शन। कैन आई से ई एक्शन इज व्हाट? 2 times E equatorial. वेरी गुड। तो तुम्हारा रिलेशन क्या हो गया, ई एक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस ई इक्वेटोरियल। इसके रिलेटेड तुम्हारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। द रेशियो इज व्हाट, 2:1, provided the distance of point P along the axis and equator is a same. अगर तुम ये कंडीशन लिखते हो ना स्टूडेंट्स, E axial is equal to twice E equatorial for a short dipole for a point P at equidistant from the center of the dipole. At point P equidistant from the center of the dipole. ये लिखना जरूरी है। Can I erase this part now? Sir, ये लिखना जरूर है स्टूडेंट्स, E axial is equal to twice E equatorial, वो लिखना जरूर स्टूडेंट्स, लेकिन किसके लिए, for a short dipole Short dipole. and at the same distance. sir, done. Done.
Students, the next concept I'm trying to put forward will be electrostatic potential energy, students, and electric potential at a point. Okay, due to a point charge. पहले तो मैं सिंगल चार्ज के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं डायपोल पे जाऊंगा. हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज हम लोग करेंगे, यानी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, और फिर डायपोल के हिसाब से जाते हैं. पहले सबसे पहले व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? लेट अस अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स. तो आंसर देना स्टूडेंट्स. अगर मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए ना इसका, तो इट्स वेरी इजी टू गेट इट. स्टूडेंट्स, इज योर एसएचएम डन और गोइंग ऑन? Sir, not started. अच्छा, नॉट स्टार्टेड. ओके, तो अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे तुम करोगे स्टूडेंट्स उसका डेरिवेशन. ओके, अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, सपोज इफ आई हैव टू गो फॉर द डेरिवेशन, लेट अस से दैट हैव टेकन अ चार्ज प्लस q. ये क्या है? मेरा सोर्स. स्टूडेंट्स, ये मेरा सोर्स है. एग्रीड? Now suppose if I say that I have considered point B, okay, and that is at a distance R2 from my source. Agreed? What I'm trying to do, अगर suppose मैं एक दूसरा चार्ज लेता हूँ, which is a positive charge, students, वो positive charge को मैंने कहाँ पे रखा students? That charge I have kept it where? Along a line joining plus Q, students. यानी मेरा जो चार्ज है वो यहाँ पर है at point A, और उसका नेचर भी पॉजिटिव है. लेकिन कंपेयर करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है. ये मेरा सोर्स है, तो ये मेरा इफेक्ट हो गया. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम द गिवन सोर्स? R2. एग्रीड स्टूडेंट्स? व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ना मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज ए पे है और ये इसके फील्ड में है. ये पॉजिटिव चार्ज इसकी जो फील्ड है वो उसके रीजन में है, ये फील्ड के अंदर है. तो मुझे बताओ, क्या ये चार्ज को अट्रैक्शन मिलेगा या रिपल्शन मिलेगा? Repulsion. Repulsion. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये इसका डायरेक्शन होगा. एग्रीड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी के डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा. लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस चार्ज को अंदर की तरफ खींच रहा हूँ स्टूडेंट्स. यानी मैं ये चार्ज है जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज को मैं लेते हुए जा रहा हूँ, और मैं लेके जा रहा हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. Let us say that my charge has undergone a displacement. My charge has undergone a displacement dr. Agreed? This charge q has undergone a displacement dr. Now, when I'm trying to move the charge from this point to this point for a small displacement, am I doing some work, students? क्या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, students? हाँ सर. हाँ sir. Against what? Against what? तो तुम क्या बोलोगे? Electrostatic field of plus. Very good. So what is actually the amount of work done? So the amount of work is Minus done of against. MdA. Very good. That means electrostatic force of repulsion we consider. ये electrostatic force of ये होगा, देखा ना, electro force we consider, and dr वो एक ही डायरेक्शन में है. स्टूडेंट्स, ये दोनों पोजीशन वेक्टर और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स. एग्री? यानी अगर मैं देखो इनका डॉट प्रोडक्ट, तो वहाँ जीरो होगा. स्टूडेंट देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है dr है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन नाउ इफ आई से एम आई डूइंग वर्क? यस. अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो सर ये नेगेटिव साइन क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा? वर्क इज डन. Work is done against electrostatic force of repulsion. तो मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे उस चार्ज को ए से लेते हुए बी तक लेके आ रहा हूँ. सपोज अगर मैंने ए से बी तक लेके आया स्टूडेंट्स, तो कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली माय इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट एग्जैक्टली आई कैन, सॉरी, ये मेरा R1 होगा, ये R2 होगा. व्हाट इज माय इनिशियल पोजीशन? तो मुझे लगे सर मैं इनिशियल पोजीशन तो ये है ना, फाइनल पोजीशन तो ये हो जाएगा. तो क्या हो गया? अरे हाँ सर, लिमिट्स आ जाएगा. तुम्हें फाइंड आउट करना है वर्क डन. वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन. द टोटल वर्क डन के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 to w विल बी इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव f into dr. cos of 0 तो 1 हो जाएगा. इनिशियल पोजीशन क्या है? सर दिस इज R1.
to final position R2. What is integration of dW will be capital W. Can I remove negative sign outside? Yes. ये कौन सा force है? Electrostatic force. What's the formula for electrostatic force? 1/4 pi epsilon naught. अगर मैं कोई medium लेता हूँ तो medium लिखो, कोई problem नहीं. Source Q effect agreed. पूरा बार आ जाएगा. Upon R square, what exactly distance I'll consider? I'll show you what exactly distance I'll consider will be. Can I say small R square I can consider in this case? Yes. Yes, sir. So now if I have to consider, can I say it's integration of dr upon R square? Initial position is R1 to final position is R2. क्या ये clear हुआ students? Yes. अगर मैं इसको integrate करूँगा students, what is integration? What is integration? 1/r into dr. X raised to n into dx. So x raised to n minus 1 upon Sir, n n minus plus 1 upon. n plus 1 upon n plus 1 तो plus 1 यानी क्या होगा? -1 बाहर आ जाएगा. ब्रैकेट में क्या होगा? 1 upon r raised to क्या हो जाएगा? Is this clear students? हाँ sir. Yes. 1 आ जाएगा. Are you getting it? So is it clear to all of you all? Yes. हाँ sir. तो तुम्हारा भी अंदर क्या लिखूंगा मैं? इसका आंसर क्या लिखूंगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k फॉर अ मीडियम. ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट्स? लोअर लिमिट अपर लिमिट. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये तुम्हारा ब्रैकेट में क्या होगा? विद इन ब्रैकेट अपर लिमिट तुम्हारा क्या है? r स्क्वायर. लोअर लिमिट क्या है तुम्हारा? r1. तो कैन आई से इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन, इज दैट क्लियर? माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ये -1 होगा. -1 था वो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स. ये देखो ये माइनस में था. इसका आंसर क्या आ रहा था? इसका भी आंसर नेगेटिव में आ रहा था. माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ यानी sir. सिंपल इफ आई कंसीडर, देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ x, ये r is to -2 होगा. x is to n plus 1 upon n plus 1. -2 plus 1 यानी -1 होगा. Are you getting it? और ये -1 माइनस जब बाहर निकाला तो माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया. फिर मैंने क्या किया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यानी ये किसका फॉर्मूला हुआ है? वर्क डन. Work done in order to move a charge from point A to point B. This work done to move a charge from point A to B gets stored in this charge. कौन सा charge में? इसमें. Work done gets stored in charge small q in the form of electrostatic potential energy. So can I say work done which is equal to electrostatic potential energy is equal to what? Capital Q small q upon 4 pi epsilon naught k for a medium 1 upon R2 minus 1 upon R1. R1 is always greater than R2. यानी जब भी तुम इसका subtraction से निकालो तुमको तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा. तो R1 minus R2 upon R1 R2. This answer is in June. Agreed students? Yes sir. Yes. ये जो वर्क डन है, कैन आई से दिस इज सिंपली वर्क डन इज नथिंग बट इट्स एक्चुअली डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं तो कैन आई से आई कैन स्टिल प्रिसाइजली राइट अ ट्रायंगल. क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी लोगे और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लोगे, है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ. यानी ये क्या हुआ? डेल्टा यू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर सपोज यही पॉइंट स्टूडेंट्स, यही पॉइंट अगर मैं इंफिनिटी पे लेता तो क्या होता? व्हाट एग्जैक्टली में R1? What is 1 upon infinity? 0. 0. So what is potential at infinity? Students, electrostatic potential energy at infinity is always 0. 1 upon infinity is 0. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Work done, which is equal to potential energy we consider. अगर मैं ये difference लिखता हूँ तो I can go for triangle. अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो I can simply write an electrostatic potential energy. What's my formula? 1 upon 4 pi epsilon naught k for a medium. Source effect upon distance between the two charges. आ गया तुम्हारा आंसर? ये तुम्हारा आंसर होगा जून. सर वो किसके लिए होगा सर? मतलब वो पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा तो
If in case if I consider, that means see one thing. What is the work done? The answer is no. What is the work done in order to move a charge from infinity to a point within the field? Since work done to move a charge from infinity to a point within the field of an electric charge. Then in that case, what exactly? The work done to move from infinity to a point is simply given by the formula 1/4 pi epsilon q upon small r. अगर तुम्हें दो finite points दिए तो तुम्हारा ये difference आएगा, लेकिन infinity पे दिया तो ये आएगा। और यहाँ पे तुम पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इन्फिनिटी में 0 हो गया। यहाँ पे लेता हो तो ये डिफरेंस आ गया डेल्टा यू। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. दिस आंसर विल बी इन Q। ये तुम्हारा एग्जैक्टली व्हाट कांसेप्ट यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिटवीन, डांस सुनो, कांसेप्ट बिटवीन एटॉमिक स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स इसी को तुम ये सोचो ना, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, चलो इसको पॉजिटिव में नेगेटिव लेता हूँ स्टूडेंट्स, इसको अट्रैक्शन मिल रहा है। अगर सपोज मैं इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से R1 से टू अ पॉइंट एट इंफिनिटी लेता हूँ तो क्या होगा? हाँ स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा तुम लोगों ने? क्या होगा? टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होगा? हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी? becomes less negative, students, and then finally becomes 0. Binding energy क्या होता है? Becomes less positive because binding energy is modulus of total energy. Students ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हाँ स्टूडेंट्स? हाँ सर। अगर सपोज किसी ने पूछा व्हाट इज द वर्क डन, स्टूडेंट्स व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विद इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट? वर्क डन to move a charge। तो बोला सर वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर तुम यहाँ से यहाँ पे लेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर मैं ये चार्ज को दूर लेके जा रहा हूँ तो एम आई डूइंग वर्क? यस, लेकिन अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉट अगेंस्ट, अगर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो इट्स इन द डायरेक्शन पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं अंदर की तरफ लेके गया तो अगेंस्ट हो जाएगा, तो दैट इज नेगेटिव। वही अगर पॉजिटिव की जगह पे स्टूडेंट, वही अगर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो इसको अट्रैक्शन मिल रहा है। तो ये तुम्हारा इसका कंसेप्ट आ गया स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर सपोज मैं ये चार्ज को नजदीक लेके जा रहा होता, एम आई डूइंग सम वर्क? नहीं। बट इफ आई एम टेकिंग इट अवे, एम आई डूइंग सम वर्क? यस। So in either case, work is said to be done against. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टूडेंट्स, we are trying to take the charge closer and closer to the source. So you are doing work against the electrostatic force. वही अगर चार्ज को मैंने इंफिनिटी पे रखा तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू रीच एट पॉइंट बी। देखो 1/r at a point b upon 1/infinity 1/infinity 0 हो गया, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी आ गया, क्योंकि हमने कंपेरिजन क्या किया है? इंफिनिटी से किया है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it getting clear, all of you all? Students, are you there? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अगर सपोज इसके प्रॉब्लम्स कैसे होंगे? आंसर इसके प्रॉब्लम्स कैसे होंगे? तुम्हें कोई चार्ज दिया होगा स्टूडेंट्स, they'll give you a charge q, okay? Are you getting it? And they'll tell you find out, आंसर सुना क्वेश्चन क्या होगा? Find out the potential energy at a point P. आंसर सुना, due to a charge capital Q. Potential energy at a point P for a charge 10⁻⁻⁶ coulomb with respect to Q having charge 10 coulomb. उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि तुमने ऑलरेडी इंफिनिटी से चार्ज को यहाँ पे लेके आ गए हो, तो तुम्हारे फॉर्मूला में ये आर ही आएगा, बस इन दोनों का डिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर उन्होंने प्रॉब्लम में दिया फाइंड आउट द डिफरेंस इन पोटेंशियल, उसके लिए क्या पूछेंगे? डिफरेंस पूछेंगे।
Find out the difference in potential energy in order to move a charge of 10 to minus 6 coulomb from 20 centimeter to 10 centimeter. तो तुम्हारा ये फॉर्मूला है. Is this clear? Yes, sir. So two students, once again I'll consider my source to be capital Q. I've taken a charge small q, point positive charge at point A. Distance is r1. Between these two there'll be a force of repulsion y because this is placed within its field. तो इसको repulsion मिल रहा है. Force of repulsion इस तरफ होगा, electric will be इस तरफ होगा, लेकिन I am trying to do work against the electrostatic force of repulsion. The work done by me in order to move the charge from A to B, we consider. I get is in the direction opposite to the electric field intensity, as well as in the direction opposite to the force. Where is the direction of electric field intensity? Outwards we consider. Where is the motion we consider? अगर तुम यहाँ पे लोगे तो उसका displacement इसी तरफ आएगा. Agreed? So if in case if I happen to find out a work done, then the work done will be in the direction opposite. The negative sign is opposite, so it's F into dr होगा. Initial and final we consider. F का formula डाल दिया, integration of dr by r, तो r raised to minus 2 into dr, integration of x raised to n into dx, सबको पता है x raised to n plus 1 upon n plus 1 होगा. करेंगे तो minus 1 हो जाएगा in this case. Is that clear? So we can consider over here, removing outside we take it, तो 1 upon r आ गया तुम्हारा. माइनस इंटू माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस में आ गया. फिर मैंने क्या किया, अपर लिमिट डाल दिया माइनस लोअर लिमिट, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ वर्क डन. ये वर्क डन एक्चुअली आई कैन कंसीडर इज व्हाट, इट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. लेकिन वही अगर पॉइंट में इंफिनिटी से लेके आ रहा हूँ तो मेरा R1 इंफिनिटी हो जाएगा. इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स क्लियर? Yes. यूनिट, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यूनिट क्या है. इफ आई हैपन टू गो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि अभी देखो ये कांसेप्ट तुमने समझ आया नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही है. तो ये किसके बारे में हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी के ऊपर. बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, स्टूडेंट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे कांसेप्ट डेवलप होते हैं यहाँ पे. तो ये कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे इसकी एनर्जी कैसे मेजर करते हो, जूल में मेजर करते हो? नहीं, उसका आंसर किसमें होगा, ईवी में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, द वर्क डन. स्टूडेंट्स, द वर्क डन in order to move a charge from one point to another due to a potential difference of 1 volt. So how much is the energy? 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Students, 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. And that is the unit for work done, also called as electrostatic potential energy. Can I erase this, students? Yes. 1 minute. Well done. Okay.
Now students, अगर तुम्हें potential energy पूछा तो please do consider for the nature of a charge. Okay, nature of the charge लेना जरूरी है. Do keep this in mind. Okay, positive, negative, ये nature लेना जरूरी, because potential energy is a scalar quantity and can be added or subtracted. Initially, it was potential energy. Now we go for potential at a point. Same diagram. Plus Q at point O. This is point A, I'll consider. Let me take this as point B. Let us say the charge is initially this is over here. Let me take this as R2. I'll take this as R1. Okay. Now suppose if I take a charge small q, which is positive. Suppose if I ask you students, what is potential at point B? Okay. Potential at point B. यानी क्या हुआ students? आंसर सुनना, please pay attention ना. ये पहले ये सोचो, जब भी अगर किसी ने पूछा ना B, तो ये सोचो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका ये फील्ड है. क्योंकि ये सोर्स है. हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चार्ज पहले इंफिनिटी पे था. हम इंफिनिटी से पहले इस चार्ज को B पे लेके, फिर B से मैं A पे लेके आ रहा हूँ. तो am I doing some work? Students, am I doing some work? Yes. Why not? पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी तो पॉजिटिव, तो वर्क नहीं कर रहा हूँ मैं. फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल रहा है ना भाई. हाँ, चार्ज को जैसे मैं फील्ड में लेके आऊंगा तो उसको रिपल्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर. तो am I doing some work? हाँ या ना? हाँ सर बोलो. अच्छा, work is said to be done in that case. So अगर किसी ने पूछा what is potential at a point? Students, potential at a point is defined as, यानी यहाँ पे मैं point भी लेता हूँ. Potential at a point is defined as work done to move a unit positive charge from where? Infinity to that point. है ना? Work needs to move from infinity to that point. What's the formula for work done? What's the formula for work done I can consider? So work done will be equal in terms of force into displacement I can consider. Yes. ये तुम्हारा work done हुआ, which is also equal to electrostatic potential energy. यानी ये हुआ potential at point B हो गया. अगर मैं suppose इसी चार्ज को अभी मैं B पे लेता हूँ, है ना? B पे लेता हूँ, तो can I say I'm going to get potential at point A? So can I say I'm getting potential at point A? Why not? So what is the potential at point A? Is the work done to move a charge, positive charge, from infinity to point A. So can you tell me where is the work done more? Where is the work done more? तो तुम क्या बोलोगे? The सर work जब is एंटर करेगा. Pardon? सर फील्ड में एंटर करेगा. हाँ, लेकिन कहाँ पे ज्यादा कम करना पड़ता है? A में. हाँ, तो कहने से work done to move a charge from, so it's work done to move a charge from infinity to A is greater than work done to move a charge from infinity to B. तो उसका मतलब क्या हुआ? Potential at point A will be greater than potential at point B. तो ये क्या बन गया? Difference in potential. यानी क्या हो गया? VA minus VB. What is difference in potential? यानी can I say it's a difference in the work done to move a charge? So can I say it's difference in electrostatic potential energy upon Q? What's the formula for difference in electrostatic potential energy? Students, delta E तुम्हें क्या मिला था पहले? क्या मिला था formula? Q upon 4 pi epsilon naught
K for a medium into bracket 1 upon R2 minus 1 upon R1 with small q था कि नहीं था? हाँ सर. ये फॉर्मूला मिला था कि नहीं मिला था, बोलो ना. Yes sir. अभी मैं सपोज मैं B पे ले रहा हूँ, फिर मैं A ले रहा हूँ, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल V at A is greater than V at B. स्टूडेंट्स यहाँ का पोटेंशियल इससे ज्यादा है, और ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. ये भी पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ पे आ गया. स्टूडेंट्स अभी सोचो, सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज को मैं छोड़ दूं ना, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं तो चार्ज मोशन में आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा. तो ये क्या हुआ? अरे हाँ सर, उसका मतलब तो आप यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर फिक्स कर दोगे तो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, क्यों नहीं होगा? तो वो क्या हुआ? ये हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी. हम पढ़ रहे स्टैटिक के बारे में स्टूडेंट्स. तो मैंने क्या किया, मैंने चार्ज को बी पे लिया, बी से ए पे लिया, ए से सी पे लूंगा, जितना नजदीक लेके जाऊंगा उतना वर्क डन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. So what's the formula for change in potential energy? Sorry, change in potential. What is the difference in potential? Difference in potential will be equal to what? Delta V, and that is equal to what? Capital Q small p upon what? 4 pi epsilon naught T for a medium, 1 upon R2 minus 1 upon R1. लेकिन, sorry, upon Q आएगा, Q will get cancelled. So can I say only Q will be there? Students, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के अंदर सोर्स और इफेक्ट दोनों आते हैं. यहाँ पे तुम्हारा इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. ये देखो, हाँ सर. ये हमेशा ध्यान में रखना. ये तुम्हारा आंसर जूल में होगा. सॉरी, वर्क डन इज ऑलवेज इन जूल. ये तुम्हारा किस में होगा? जूल पर कॉलम. दैट मींस वोल्ट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Yes. नाउ सपोज अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स, अगर मैंने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, लेट अस अज्यूम द चार्ज इज एट इंफिनिटी. व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी? 0. 0. So what is the formula for potential at point A? Students, formula for potential at a point. Potential at a point within an electric field. Within an electric field of a given charge. What's the formula? 1 upon 4 pi epsilon naught K for a medium, capital Q upon small r. This answer will be in volt. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 upon R1 is 0, 1 upon infinity 0. यानी स्टूडेंट्स अगर दोनों को तुम देखोगे ना, आइडेंटिकल है स्टूडेंट्स. सिर्फ फर्क ये है कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हारा इफेक्ट चार्ज आएगा, यूनिट जूल हो जाएगा. दिस विल बी रिमेनिंग एज इट इज. इफ आई आस्क यू पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, तो इन्फिनिटी के हिसाब से इसको 0 ले लो. वही तुम्हारा डिफरेंस इन पोटेंशियल आ गया तुम्हारा वोल्ट में, पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ गया. दिस इज इन वोल्ट, दिस इज आल्सो इन वोल्ट. So now if somebody asks you students, what exactly the electrostatic potential energy at infinity? 0. What is potential at infinity? Potential at infinity is also equal to 0. Is this clear? For a unit positive charge, when I'm trying to bring it within the field, am I doing work? Yes, against the force of repulsion. For a negative charge, no work is said to be done. वर्क कभी होगा नेगेटिव चार्ज के लिए? जब भी मैं फील्ड से बाहर निकालूंगा तो वर्क होगा. अगर ये पॉजिटिव है और अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, फील्ड से बाहर लेके जाऊंगा तो वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट. स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव चार्ज का मोशन अगर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वर्क डन इज नेगेटिव. लेकिन पॉजिटिव चार्ज को मैं नजदीक लेके आ रहा हूँ तो वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद दैट. तो पॉजिटिव चार्ज तभी नेगेटिव होगा. So are the two formulas clear with you students? Potential at a point, potential difference between 2 points, potential energy at a point, difference in potential energy, that is difference in work done. Are all these formulas clear with you all? Yes. Yes sir. और ये सारे formulas किसकी हिसाब से? Due to unit positive charge. डाइपोल नहीं है स्टूडेंट्स, अभी तो सिर्फ मैंने सिंगल चार्ज लिया है. डाइपोल का भी फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल का. जब दो चार्जेस आते तो क्या होगा?
ये सिर्फ सिंगल चार्ज के हिसाब से है। Can I erase this, students? Yes. Students, can anybody give me the graphical representation of electric potential with respect to position? So what's the formula? Sir, it will be hyperbolic. Inversely देखो ये proportional. पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ग्राफ विल बी व्हाट? हाइपरबोला। एग्रीड। लेकिन स्टूडेंट्स, व्हेयर इज द पोटेंशियल मैक्सिमम? अगर सपोज मैंने कोई चार्ज दिया, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर सपोज इफ आई से द चार्ज इज ऑन द सरफेस, प्लीज पे अटेंशन, ये सेंटर है, चार्ज इज ऑन द सरफेस वी कंसीडर, सो व्हाट डू आई अज्यूम? द चार्ज इज इनसाइड। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, पोटेंशियल इनसाइड and on the surface remains constant. Potential at every point inside till the surface remains constant. As you go away from this, potential goes on decreasing and finally at infinity potential becomes zero. ये clear हुआ? क्या ये clear हुआ? अगर मैं ग्राफ बताता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, मैंने पूछा व्हाट इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन। तो अगर किसी ने पूछा let us say the charge is inside and it's positive, can I assume the change of the same charge to be on the surface? Yes. The potential at the center and on the surface remains constant. ये तुम्हारा सेंटर है, agreed? ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, ये तुम्हारा रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया, वहां तक तुम्हारा पोटेंशियल मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। लेकिन जैसे तुम दूर चले गए, स्फीयर से दूर चले गए at a point P, और फिर तुम infinity को, what happens? Potential goes on decreasing and finally the graph becomes exponential. क्या ये क्लियर हुआ फॉर्मूला? ये क्या क्लियर हुआ ग्राफ? Sir, Yes. can you explain again? How is potential with position? Students, potential and R, are they directly variation or inverse variation? Inverse. Inverse variation का ग्राफ क्या आना चाहिए? Y is inversely proportional to x, so graph will be what? Hyperbola. हाइपरबोला आना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर मैं सपोज, अगर मैं दूं तुम्हें एक स्फेरिकल कंडक्टर दूं स्टूडेंट्स, ओके, अगर मैं बोलूं चार्ज सेंटर में है, तो क्या मैं उसको अज्यूम कर सकता हूँ सरफेस पे? बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज इनसाइड ऑन द सरफेस, हाँ या ना? If I take a spherical conductor and if I say the charge is 10 microcoulomb, what is this 10 microcoulomb? So the 10 microcoulomb is uniformly distributed throughout the surface. हाँ या ना? Can I say Yes, that? sir. Can I say that the entire charge is concentrated at the center also? Yes. Yes. अगर मैं बाहर देता हूं तो can I assume the charge is concentrated at the center also? Why not? Now suppose अगर किसी ने पूछा what is the potential at point O? Potential on the surface, and as you go away from it, what happens to the potential? So potential is what we consider. The potential is maximum we consider inside and on the surface, because ये सारे कौन से equipotential surface हो गए, ये सारे equipotential surface हो गए। From the center till the radius, because we have the charge distributed throughout is the same. तुम्हारा अंदर है as well as on the surface remains the same. Magnitude of charge is the same. लेकिन जैसे तुम दूर जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा inverse variation का factor आना शुरू हो जाएगा। So potential inside and on the surface remains constant and its maximum. As you go away from the spherical conductor, what happens? The potential goes on decreasing. Is this clear? Friends, is this clear? Yes. Yeah. अभी सपोज यही डायग्राम दे रहा हूं मैं, और मैंने पूछा प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। चलो इसी में मुझे बताना, चलो इलेक्ट्रिक, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लिया y एक्सिस पे, और मुझे ग्राफ दिखाना है पोजीशन के हिसाब से। ये आ रही है, देखो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R।
अभी मुझे E with respect to R चाहिए, तो क्या करोगे? So a student who's wise and smart enough will say, sir, electric field intensity inside a charge conductor is always 0. Electric field intensity inside a conductor is always 0, whether it is at center, whether anywhere along the radius, 0, 0, 0, 0. Electric field intensity कहाँ से शुरू होगा? सरफेस से शुरू होगा। और जैसे वो बाहर की तरफ जाएगा, what's going to happen? It will go on decreasing. तो तुम्हारा ग्राफ ये भी एक्सपोनेंशियली है, यानी तुम्हारा ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। Students, E with respect to position will start in this manner. ये 0 inside. V with respect to position parallel और फिर जाएगा exponential. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, are the two graphs clear to all of you? Yes. Sir. Can I erase this now? 1 minute. Can I erase it, students? Erase करो students. Sir, done. जब तुम ग्राफ करोगे स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन और फॉर्मूला क्या है? E का अपॉन R स्क्वायर आता है, ये ध्यान में रखना students. और ये सिर्फ अपॉन R आता है, लेकिन दोनों केस में तुम्हारा पोजीशन के हिसाब से ही आएगा। ये स्मॉल r सेंटर में 0 होगा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस, बाहर की तरफ जाके तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल। Now students, in short,
हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज। सबसे पहले तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला तो सबको मालूम होना जरूरी है, उसको वो अगर पता चल गया ई का फॉर्मूला क्या ना, सारे फॉर्मूले आ जाते हैं स्टूडेंट्स। F is equal to what? 1/4 pi epsilon naught K for a medium, capital P small p upon r square. Electric field intensity का फॉर्मूला force upon charge effect, तो Q कैंसिल हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught K Q upon r square. ये होगा F inversely proportional to r square, ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा, E is inversely proportional to r square, ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा दोनों केस में, ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के टाइम पे नेचर नहीं लेता है। अभी इसके बाद में अगर मैं चाहूँ तो मैं वो कौन सा फॉर्मूला में, इफ आई कैन फिगर इट आउट, सपोज इफ आई हैपन टू गो फॉर द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट, चलो ना पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट तुम्हें मेमोराइज नहीं करना स्टूडेंट, सिंपल 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लेना है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन। कैसे याद रखोगे? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, है ना, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4, देखो ना, मालूम है तुम्हारे सामने, 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K सोर्स इफेक्ट अपॉन r स्क्वायर इनटू स्मॉल r अपॉन Q। एक स्मॉल r कैंसिल हो गया, एक Q कैंसिल हो गया, आ गया तुम्हारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? और ये आंसर वोल्ट में आ गया। Yes. यानी सिंपल तरीके से याद रखो ना, F इंटू आर। वही अगर डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे आया और यहाँ पे लिया तो ये डिफरेंस आ गया, VB इज ग्रेटर देन VA, तो डिफरेंस आ गया। अब जब ये डिफरेंस निकालोगे स्टूडेंट्स तो 1 अपॉन क्या आएगा? RB माइनस 1 अपॉन RA। ये ध्यान रखना क्योंकि RA माइनस RB ये पॉजिटिव में आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका भी क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा? सेंटर से लगा के सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, फिर ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा पोजीशन के हिसाब से। अगर लोगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन स्टूडेंट्स? अगर मैं पोटेंशियल है तो क्या होगा? V इज W अपॉन Q, वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इज इक्वल टू वर्क डन। क्या होगा? अरे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, खत्म हो गया। तो V का तो ये है, साथ में Q डाल दो। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी डिफरेंस आया तो सेम कंसेप्ट आ गया ब्रैकेट में। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ सर। दिस इज इजी वे टू गेट इट एंड रिमेंबर इट। डाइपोल का हम लोग को पता चला। ये ध्यान रखना कि अगर कोई डाइपोल है और अगर मैं एक्सिस पे लेता हूँ एट अ पॉइंट P, देन यू लुक एट P अलोंग द एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस E इक्वेटोरियल। गॉट इट स्टूडेंट्स? अभी देखो E और एक्सिस, अब मुझे बताओ E एक्सिस और इक्वेटर में डिनोमिनेटर अगर सपोज मैंने शॉर्ट डाइपोल नहीं दिया तो कैसे याद रखोगे? जो स्टूडेंट स्मार्ट होगा वो क्या करेगा मालूम है? स्टूडेंट ध्यान देगा, ये माइनस Q है, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, प्लस Q है। अगर मैं एक्सिस के हिसाब से बात करता हूँ तो तुम्हें क्या मिल रहा है? मतलब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये R है, ये R माइनस L है, ये R प्लस L, इतना तो पता ही है ना। तो जब भी एक्सिस का फॉर्मूला होगा और वो शॉर्ट डाइपोल नहीं होगा तो डिनोमिनेटर में तुम्हें a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बिंदास डाल देना। a प्लस बी a माइनस बी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2। यानी ये भूल भी नहीं सकोगे एक्सिस के लिए, शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो ये फॉर्मूला नीचे आएगा। अगर नीचे मुझे r क्यूब चाहिए, नीचे मुझे r क्यूब चाहिए तो ऊपर एक r आएगा 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 फॉर्मूला में। और तुम्हें ये तो मालूम है ये एक्चुअली इज ट्वाइस ई इक्वेटोरियल। जी पता चला? Are you getting it? Yes, sir. वही अगर मैंने सपोज इक्वेटर पे ले लिया, वही अगर मैंने इक्वेटर पे ले लिया तो देखो ना कैसे याद रखोगे? सर ये L है, ये R है, तो देखो ना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में तो आ रहा है, तो तुम्हें ये मालूम कि रूट में है लेकिन नीचे मेरे को 3/2 आना चाहिए। फिर क्यों नीचे 3/2 आना है? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर में R क्यूब आता है। तो देखो अगर मैं इसको निगलेक्ट करूँ तो R⁻², ये कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब आ गया, तो वहां पे ऊपर R नहीं आता। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी इक्वेटर के टाइम पे तुम्हें स्मॉल r ऊपर नहीं मिलता था लेकिन एक्सिस के टाइम पे मिला स्मॉल r। दिस इज हाउ स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट इट, ये रिमेंबर करते हैं, ये a प्लस बी, a माइनस बी और ये पाइथागोरस थ्योरम को याद रखते हैं। ये याद में आ गया। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना तुम इसको ध्यान से समझोगे ना तो तुरंत तुम्हारा मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट भी सही जाएगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल जाएगा। क्योंकि ये जो डाइपोल है ना माइनस प्लस, वही मैं मैग्नेट के अंदर भी बता सकता हूँ।
ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये एक्सिस हुआ मैग्नेट का और ये इक्वेटर हुआ मैग्नेट का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी तो फॉर्मूला आ सकता है ना। That is why students, when teachers try to work it out, they try to teach gravitation first, then goes for electrostatic, then comes for current electricity, then comes for magnetic effect, magnetic field and magnetism. फिर तुम्हारा electromagnetic induction concept आता है। Is this clear, students? हाँ सर। Next lecture will be continuing from your onwards. Okay? Chalo, we'll wind up the sessions. Okay. Thank you sir. Bye. Bye. Excuse me, sir.